Okay, I've started the recording. So we can either convert a voltage source to a current source, and it's vice versa can also be done. That is, a current source can be converted to a voltage source, right? So how it can be done, we will see with the help of some basic examples. Like let us consider, first of all, let us consider a voltage source, and we want to convert it into a current source. So this is a voltage source having this set of polarity, and magnitude of the source is V. R is the resistance, right? And these are the two output terminals, A and B. So the first step is in the conversion process is to calculate the short circuit current between the two terminals across which the voltage source is connected, right? So these are the two terminals, A and B, and let us consider this R resistance as the internal resistance, or the resistance connected in series with the voltage source. So first step is to calculate the short circuit current. So just what you have to do, you just short circuit these two output terminals and calculate the short circuit current, ISC or I whatever. This will be the magnitude of your current source. तो यहाँ से I अगर कैलकुलेट करते हैं, so you will get I is equal to V by R, right? So this is the current source having magnitude I, and then you will have to connect the resistance or resistor which was earlier connected in series with the voltage source. Now it should be connected in parallel, that is across the current source, right? Same resistance, I is equal to V by R, right? इसका फिलॉसफी ये है कि by any means voltage across the output terminal should be same. So if you calculate the voltage in the first case, that is when it was a voltage source in the basic circuit, then what will be VAB? VAB क्या होगा? Simply it will be V, जो open circuit terminal है AB. Due to this reason no current will flow through. I जो होगा वो zero होगा यहाँ पे. So whatever is the magnitude of the voltage source, that will appear across the output terminal of the voltage source. Now here after conversion, if you calculate VAB again in this circuit where we have a current source, then what will be VAB? बताओ. Current source having magnitude I and its value is equal to V by R. So same current will flow through this resistor also R, because Yes, in this part the current will be zero due to the open circuit terminal A and B. So VAB will be again equal to I into R, that is V. So same voltage should be there across the output terminal also after conversion, right? Now this is the process of conversion of a voltage source to a current source. Now if we want to convert this current source into a voltage source, then the step should be this is the process: a current source with a parallel resistance can be converted into a voltage source with a series resistance, right? तो इस केस में मान लो क्या करेंगे कि पहले हम लोग जो है निकालेंगे कि वोल्टेज क्या होगा आउटपुट टर्मिनल के अक्रॉस.
जैसे यहाँ शॉर्ट सर्किट किए थे ए बी को, तो यहाँ पे तो ओपन सर्किट ऑलरेडी है, ठीक है। तो वी ए बी कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी योर मैग्नीट्यूड ऑफ द voltage source. So V will be the magnitude of voltage source. Then you have to connect this resistor in series with that voltage source. So these are the steps in each mode. That is when we are converting the voltage source to a current source, and it's vice versa. Right. Now, based on this technique, source conversion technique, based upon this short circuit technique, अच्छा ये समझ में आया कि नहीं है, ये बताओ पहले। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, थोड़ा कंफ्यूजन रह गया। ओके देखो इसमें जैसे कि इनिशियली वी हैव कंसीडर्ड दिस सर्किट voltage source having a voltage source V and having a series resistor R connected in series with the voltage source. Now we want to convert this voltage source into a current source, right? So the philosophy behind this, or the step behind this, should be that your open circuit voltages should be same, right? तो पहले करना क्या है यहाँ पे कि ए बी टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। फिर कितना करंट फ्लो हो रहा है, शॉर्ट सर्किट करंट कितना फ्लो हो रहा है, दैट वी विल कैलकुलेट, एंड दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ योर करंट सोर्स, right? So if after short circuiting these two terminals we are getting the current, suppose I or ISC, so in this circuit what will be the value of ISC? It will be V by R. So this V by R will be the magnitude of your current source in the transformed circuit, and then you have to connect the resistor in parallel with that current source, which was earlier connected in series with the voltage source, ठीक है। और just इसका opposite करेंगे when we want to convert a current source to a voltage source, right? तो पहला ये है कि open circuit voltages should be same, and second one is your respective short circuit current should be same, right? ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि यहाँ शॉर्ट सर्किट करंट कितना था, I इज इक्वल टू वी बाई आर। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी अगर हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे दोनों टर्मिनल को ए एंड बी को, तो सेम करंट I इज इक्वल टू वी बाई आर विल फ्लो थ्रू द शॉर्ट सर्किटेड पाथ। आर के थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा बिकॉज वी विल डू द शॉर्ट सर्किट, राइट? तो इसको जो है और बेटर वे में समझने के लिए एक एग्जांपल देखो, उससे जो है सो समझ में आ जाएगा अच्छे से कैसे करते हैं। So the example is, question is, there is a circuit, suppose this is a circuit, plus minus 6 volt, then we have a resistor, and again we have a resistor, here again there is a resistor, and here we have a current source, and then we have two resistors connected in this way. Suppose this is the load resistance RL having magnitude of 3 ohm. This is 1 ohm. This is 3 ampere. This is 2 ohm. This is 6. This is 3. Right. So using source conversion technique, find the load current. Let the load current is IL. Find IL. देखो इस सर्किट को बहुत तरीका है सॉल्व करने का, बट हेयर इट इज मेंशन्ड दैट यू हैव टू यूज द सोर्स कन्वर्जन टेक्निक। तो
बताओ सोर्स कन्वर्जन में क्या करेंगे। तो इसको देखो ऐसे कर सकते हैं, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था जस्ट इससे पहले कि वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में कोई रजिस्टर कनेक्टेड है तो उसको हम लोग करंट सोर्स में बदल सकते हैं। ठीक है, तो इस सर्किट को हम लोग इस वे में लिख सकते हैं, we can convert the voltage source of 6 volt magnitude into a current source where the value of this current source will be how much, बताओ। V by R. Sorry, yeah. मैग्नीट्यूड बोलो। 2. yes it will be 2 एम्पियर 6 वोल्ट बाय 3 ओम। बोले थे ना कि जो आउटपुट टर्मिनल होगा उसके अक्रॉस उसको शॉर्ट करके जो करंट होगा, इसको मान लो शॉर्ट कर देंगे तो the current flowing through this will be I is equal to 6 by 3, so this will be 2 ampere and then you have to connect this 3 ohm resistor in parallel, तो ये हो गया। फिर क्या है आगे सर्किट में एक 6 ohm कनेक्टेड है, then we have a 2 ohm, step by step करो then you will understand in a better way। 3 ampere 2, and again here we have two set of resistors which is connected in series, 1 ohm and 3 ohm. This is your IL which we have to calculate, right? अब देखो, अब ये आ गया। अब बताओ कि ये 3 ओम का रजिस्टर जो है और 6 ओम का रजिस्टर ये सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है? Parallel. Yes, parallel, because if any current, suppose I is flowing through from this point in this path, then it will be divided in the two circuits. Same current is not going to flow. It means they are connected in parallel. तो 3 और 6 ओम का जो रजिस्टर है, its equivalent will be how much? 2 ohm. 2 ohm. Right. 2 It ohm. will be 2 ohm. Step by step draw करते जाओ सर्किट, then you will understand. This is RL, this is IL, 3, 1, 2, 2, and this is again 3 ampere. Right. अब देखो, अब यहां से क्या बता सकते हो डायरेक्टली कि कितना करंट फ्लो करेगा IL? IL कितना होगा? थोड़ा मुश्किल है डायरेक्टली बता पाना, इसीलिए once again you have to do the source conversion. So here you can see that there is a 2 ampere current source and 2 ohm resistor is connected in parallel across this current source. So we can convert this current source into a voltage source. ठीक है, ये हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं सर्किट को। So now you tell me what will be the magnitude of this voltage source after conversion of this current source. 4 volt. 4 volt. 4. Right, it will be simply 4 volt. And what we have to do again? We will have to connect Connecting this 2 ohm two resistor in series. series. Right, in series. इस तरह से। RL, IL, 1, 3, 3 ampere. This is your 2, this is your 2. Right. So this 2 and 2 are connected in series or parallel? Series. So Series. these are connected in series. So we can represent it by equivalent resistance of how much ohm? 4. Right, 4 ohm. ठीक है। अब देखो, अब इसमें जो है एक वोल्टेज सोर्स है, उसके सीरीज में कनेक्टेड है 4 ओम का रजिस्टर। सो वंस अगेन यू कैन ट्रांसफॉर्म इट इनटू ए करंट सोर्स। ये एग्जांपल मैंने इसीलिए कंसीडर किया है कि इसमें 2-3 बार जो है सो तुमको कन्वर्जन करना पड़ेगा, तो दैट विल बी क्लियर। तो अगेन वी कैन कन्वर्ट दिस वोल्टेज सोर्स टू ए करंट सोर्स हैविंग मैग्नीट्यूड I is equal to V by R, that is 1 ampere, and then you have to connect this 4 ohm resistor in parallel, then you have a current source
of 3 ampere magnitude, and then you have two resistors, 1 ohm, 3 ohm, which is RL, and IL is the current, load current. ठीक है, अब बताओ कितना करंट होगा IL? अब यहां से डायरेक्टली यू कैन से 4 ampere. बताओ कितना होगा? Sir, एक 4 आंसर आया, ampere. एक आंसर आया 4 एम्पियर। और कोई आंसर है? अच्छा, इस सर्किट को तुम इस वे में भी और सिंपलीफाई कर सकते हो कि जैसे कि देखो इस तरह से रीड्रॉ कर सकते हैं इसको। थ्री 1 4, this is 1 ampere, this is 3 ampere। अब बताओ, we have here 4 ohm resistor connected in parallel across Sir, the it current will source। be 2 ampere. हाँ बताओ, 2 ampere. Current will be 2 ampere. answer we are getting 2 ampere। 2 ampere. So the right one is 2 ampere because here we have two resistors, 4 ohm one and another one is also 4 ohm, because 1 ohm and 3 ohm are connected in series, same current is flowing, so this is also equivalent resistance will be 4 ohm. So the total current, total source current here is 4 ampere, right? So you can further redraw this circuit in this way. You can combine these two current source having the equivalent magnitude of 4 ampere, and then we have two branches of resistors, one having 4 ohm and another also having 4 ohm, 3 plus 1, because 3 and 1 are connected in series. So this 4 ampere current will be equally divided because the impedance or resistance of both the paths or both the circuits are same. So 2 ampere current will flow through each path. So your load current here will be 2 ampere. सबको समझ में आया कैसे सोर्स कन्वर्जन करते हैं? Yes. Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। तो इसमें मैं एक मतलब जो है सो क्वेश्चन एग्जांपल लिखता हूं, तुम लोग खुद से उसको अपना घर पे सॉल्व करो। घर पे ही हो सब लोग, हॉस्टल में मतलब बाद में सॉल्व करोगे खुद से। क्वेश्चन है, रिप्लेस द गिवन नेटवर्क by a single current source in parallel with a resistance। सर्किट है ये, this voltage source is of magnitude 20 volt plus minus, then this is 3 ohm resistor, this is 6 ohm resistor, this is 10 ampere current source, and these are the
Okay, there was a network problem. आवाज आ रही है अभी? यस आ रही है। Okay. So according to the question, you have to convert this circuit into a simple circuit having a current source. मान लो कि I उसका मैग्नीट्यूड होगा कुछ जो भी कैलकुलेट करोगे, with a equivalent parallel resistance. इस तरह से बनाना। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन डू इट नाउ। तो इसको ट्राई करना अपना, ठीक है? Now we will talk about some basic concepts. तो ये जो था अभी बेसिक पार्ट जो नेटवर्क थ्योरम का था, बीसी नेटवर्क थ्योरम का, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नाउ वी विल मूव अहेड टुवर्ड्स द नेटवर्क थ्योरम्स। जो कुछ थ्योरम्स होते हैं, जैसे कि थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ना है तुम लोगों को, सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ना है, नॉर्टन थ्योरम पढ़ना है, और भी कई सारे थ्योरम्स हैं। So before starting that part, network theorems, you should know some basic things about the basic definitions of some standard terms, like what is ideal voltage source, what is ideal current source. Till now, whatever source we are discussing, that is basically a practical source. Yes. There is some problem in your voice. आवाज क्लियरली नहीं आ रही है? No, ब्लर कर रही है। no sir. ओके, अभी आवाज आ रही है? सर सेम एब्लर है अभी। चलो एक बार मैं फिर से रिकनेक्ट करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। हेलो, हेलो, अभी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, थैंक यू। So now we will talk, before starting the network theorems, we will talk about some basic concepts which will be required while we will discuss this network theorems. So first one is ideal voltage source current, also voltage source or constant voltage. Right. So you can define it in this way. Is that voltage nearly or the load current occurs in the system, right? Sir, your voice is breaking. Voltage output voltage remains
same load current. This type of voltage source or zero internal, zero or very less, zero, or you can say that practically zero is not possible, so very less internal resistance, right? So due to this zero or very less internal resistance, there will be negligible voltage drop, or zero voltage drop will be there, right? So therefore, the output voltage provided by that voltage source would remain constant irrespective to the magnitude of the current drawn from it. So this is the property of a ideal or constant voltage source. So now, with the help of one example, suppose we have a voltage source having magnitude of 6 volt, and let us consider there is some internal resistance of this voltage source. This resistance is not of the external circuit. This is the internal resistance of the voltage source we have considered. Suppose these are the two output points A and B, and across this two output terminals we have, suppose, load resistors connected. If V0 is the output voltage across these two terminals or across the load, right? So according to the definition of ideal or constant voltage source, the value of this R should be ideally 0, or it should be very small value. So let us consider some value like 0.005 or 5 milliohm resistance, which is actually very less. So in that case, what will happen? इसमें लिखने दो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा कि ये रेजिस्टेंस किस चीज का है. So let 6 volt source has an internal resistance of 5 milliohm, right? तो इसमें देखो कि when there is no load, अगर ये लोड मान लो जो यहाँ कनेक्ट किया है हम लोगों ने, if we consider it as an open circuit, that is at no load, V0 क्या होगा? V0 का वैल्यू क्या होगा बताओ? 6 volt. Right, it will be 6 volt because no current will flow through it. Now, second case, if load increases in the system, if we increase the load, and suppose if the load current becomes equal to yes. That A and B point are shorted. No. These 2 points are not sorted. Here I have mentioned the voltage across the output terminals. A and B are connected through a load resistor. Then why it will be 6 volts, sir? It should be some less, sir, because of that R, small r. No, because here we have considered first of all the no load condition. No load condition means the magnitude of this R will be what? 0. ये जो है तुम्हारा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा नो लोड, मतलब वी हैव नॉट कनेक्टेड एनी लोड, इसका मतलब ये ओपन सर्किट कंडीशन में. Okay, sir. ठीक है? That's why no current will flow and hence no drop will be there in this small r.
now if suppose load current is increased up to let us say 100 ampere, जीरो से सीधा इनिशियली लोड करंट जो था 0 एम्पियर था, व्हाट वी हैव कंसीडर्ड हियर 0 एम्पियर. नाउ बाय इंक्रीजिंग द लोड वी हैव इंक्रीज द लोड करंट अप टू 100 एम्पियर. अच्छा, लोड इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है? मान लो कि एक सर्किट हम ऐसा कोई कंसीडर करें, इस सर्किट को भी रहने दो, लेट अस कंसीडर दिस वन. Sir, it should एक be कोई ohm, I think. this is 6 volt suppose, or any volt. Suppose there is a RL1 load connected across the two output terminals A and B. अच्छा, अब मान लो कि if we want to increase the load on this circuit, इसका मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीज करना. रेजिस्टेंस इंक्रीज करना. अच्छा, लोड बढ़ाने Sir, का power मतलब क्या? लोड consumption, हाँ. बढ़ाना है तो सीरीज में Power कनेक्ट consumption. करेंगे. नहीं, पहले सुन लो, सीरीज में कनेक्ट करेंगे लोड को या पैरेलल को? सीरीज. सीरीज में. अच्छा, घर में, तुम लोग के घर में या हम लोग के सबके घर में जो डिफरेंट लोड्स हैं, लोड का मतलब आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट एनीथिंग व्हिच कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल पावर, दैट इज इलेक्ट्रिकल लोड. तो मान लो कि जैसे घर में बहुत तरह के लोड है, फैन है, लैंप्स हैं, फिर एसी, फ्रीज, व्हाटएवर, जो भी डिफरेंट एक्सेसरीज है, दैट आर बेसिकली इलेक्ट्रिकल लोड्स. सो दोज लोड्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल और इन सीरीज. पैरेलल सर. राइट, ऑल द लोड्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, बिकॉज अगर मान लो कि सीरीज में कनेक्ट कर देंगे बहुत सारे लोड को, मान लो कि ये 3 लोड है, जैसे जिसका रेजिस्टेंस RL1 है, RL2 है, RL3 है. अगर एक में भी कुछ शॉर्ट सर्किट या कुछ फॉल्ट होगा, सो इंटायर लोड डिमांड विल बी इंटरप्टेड ड्यू टू द फॉल्ट इन एनी लोड इन द सिस्टम और हाउस. तो ये जो है रिलायबल ऑपरेशन नहीं होगा सिस्टम का. देयरफॉर in order to increase the reliability and also for the safety point of view, all the loads are connected in parallel. ठीक है? तो मान लो कि पहले RL1 था, अब RL2 हो गया, अब RL3 हो गया. So different loads are connected in parallel, so accordingly IL1 will flow through first load, IL2 will flow through second, and IL3 will be through the third load. तो अब बताओ कि the net current जो drawn होगा IL from the source or from the grid, that will increase obviously. Yes. Increase करेगा ना अगर लोड बढ़ाएंगे तो. क्यों बढ़ा? Yes, sir. Because the different loads are connected in parallel, so the equivalent resistance of the loads will be lesser. ठीक है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो करंट जो होगा सर्किट से वो इंक्रीज करेगा. ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes. किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? Sir, can we say load is inversely proportional to resistance? Not exactly you can say that. We are here saying it due to the combined effect of the loads. Because suppose if you are talking about an individual load, right? What was your question? Once again, repeat that. Sir, I asked, can we say if we increase load, then resistance will decrease? No, directly you cannot say that. This is true for a independent load or isolated load in the system. मान लो कि अगर लोड जो है सो तुम बढ़ा दोगे, जैसे कि लोड की बात हम करें अगर एक सिंपल सर्किट में, प्लस माइनस हियर, दिस इज RL, राइट. अब यहाँ पे तुम अगर RL बढ़ा दोगे तो इसका मतलब क्या होगा? मान लो RL की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है. एक सपोज मोटर है, ठीक है. मोटर का रेटिंग बढ़ेगा तो ऑब्वियसली लार्ज करंट विल बी ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई इन ऑर्डर टू फुलफिल द लोड डिमांड. ठीक है. लोड बढ़ाने का मतलब इनडायरेक्टली यू आर इंक्रीजिंग द करंट. द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई इज गोइंग टू इंक्रीज.
ठीक है, लोड करंट जिसको बोलते हैं, तभी तो उस लोड को तुम मतलब लोड का यूज कर सकते हो. दैट लोड विल आइदर रन और विल ग्लो व्हाटएवर. मोटर है तो मोटर रन करेगा तभी रेटेड स्पीड पे, जब रेटेड लोड करंट फ्लो होगा थ्रू दैट. So when rated load current will flow, when it will draw more current from the supply system. Actually your supply is basically a infinite type of system. जो घर में सप्लाई आ रहा है वो कोई फिक्स्ड तुम्हारा उसका मैग्नीट्यूड नहीं है कि तुम इतना किलोवाट से ऊपर चले जाओगे तो तुम्हारा जो है सो बैठ जाएगा, सिस्टम ठप पड़ जाएगा. दैट इज कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल ग्रिड एंड ग्रिड इज बेसिकली इनफाइनाइट सोर्स. ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहे हैं हम लोग कि इनिशियली देयर वाज नो लोड, सो लोड करंट वाज जीरो. ठीक है, नाउ व्हेन वी इंक्रीज द लोड फ्रॉम सपोज 0 टू सडनली 100 एम्पियर, इसका मतलब क्या, बहुत सारे लोड को हम कनेक्ट कर दिए पैरेलल में, या फिर एक सिंगल कोई लोड था जिसकी वजह से 100 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू दैट सर्किट. लोड करंट इज 100 एम्पियर. सो व्हाट विल नाउ हैपन? So in this case, if we calculate the output voltage V naught across this load, so this will be simply 6 minus 100 times 5 milliohm, that is 0.005 ohm. So this will be your 6 minus how much? 0.5, that is 5.5 volt. ठीक है, तो अब लोड जब 100 एम्पियर हो गया, तो in that case also we are getting the output voltage across the load equal to 5.5 volt. So which we can consider nearly equal to 6. Why? Because for a huge variation in the load current 0 से 100 एम्पियर, जब 100 टाइम्स मान लो कि बढ़ गया लोड करंट, फिर भी जो है सो वोल्टेज ड्रॉप ओनली देयर इज a voltage drop of 0.5 volt. So this type of source can be considered as a ideal voltage source, right? Because for a wide variation in the load current from 0 ampere to 100 ampere, there is a slight variation in the output terminal voltage of 0.5 volt only. So it can be considered as an ideal voltage source. समझ में आया ये? Hello. Yes, sir, I got it. Okay, okay, thank you. So just a minute. So now we will talk about this ideal current source. Ideal or constant? Ideal or constant current source, right? So in order to understand this, what we can do, अच्छा एक मान लो एक और सर्किट उसी का जो है सो पहले देख लो, जो भी पहले हम लोग डिस्कस किए और क्लियर हो जाएगा कि in the first case we have considered a very small value of this resistor, internal resistor of this resistance of this voltage source having 6 volt magnitude. So now let us consider this R as very large value, like nearly 1 मेगा ओम और 10 to the power 6 ओम, इस रेंज में अगर मान ले बहुत ज्यादा, ठीक. And again we have a load resistor connected across these two output terminals A and B. This is RL and this is your equivalent source. So RL is suppose कुछ रेंज है RL का 20 से 200 किलो ओम, ठीक. That is, here we want to say that the internal resistance which is 10 to the power 6 ohm, that is a small r,
is very large compared to the load resistor, load resistance, जो कि किलो ओम के रेंज में लोड रेजिस्टेंस, और तुम्हारा इंटरनल इंपीडेंस जो है वोल्टेज सोर्स का, दैट इज in the range of mega ohm, 10 to the power 6 range, right? So for a current source, you can say that for a current source, can be written as equivalent to that voltage source whose internal resistance is, ideally you can say it is infinity, or you can say very large value, right? So indirectly we can say that it can be assumed as a source which possesses very high resistance as compared to that of external connected load, external load resistance, right? तो मान लो कि यहाँ पे we have here considered a 6 voltage source having internal resistance of 1 mega ohm, and let the load resistance varies from 20 20 to 200 kilo ohm, right? So in this case, suppose first of all, in the first case, when least value of when we consider the least value of RL, that is 20 kilo ohm, RL जब 20 kilo ohm. So in this case, what will be the current flowing through this circuit? So let I is the current flowing through the circuit. So this will be equal to I is equal to 6 divided by 10 to the power 6 plus Plus 0.02. 0.0. how much? 0.02. 0.02. ठीक है, 20 ओम जब Yeah. कंसीडर किलो ओम जब कंसीडर किए हैं तो इसका वैल्यू कितना आएगा? बताओ कितना आएगा Sir, इसका? obviously 6 into 10 power minus 6. से द एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट कितना आएगा? ये है तुम्हारा वोल्ट में, और यहाँ है तुम्हारा मेगा, नहीं सॉरी, ओम में हुआ ना ये, या कितना हुआ? सर माइक्रो में कुछ आएगा सर. माइक्रो में आएगा कितना? अच्छा कैलकुलेट करने दो मुझे. ओके, इट इज around 5.88 microampere, right? Now second case, let us Sir, 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 sir. Am I audible, anyone?
हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. बताओ, कोई कुछ Yes, sir. Yes, sir. There you have written small r is equal to 10 power 6 mega ohm. Sorry, it is 10 to the power 6 ohm, you can say. Otherwise, you can say 1 mega ohm. Right, Okay, sir. 10 to the That power was 6 confused. ohm. Okay. Sorry for that. Please modify that. Then in the second case, let us consider when your full load resistance is used in the circuit, that is 200 kilo ohm, the maximum value of the load resistance. So in this case, what will be the total resistance of the circuit? Total resistance will be R plus RL, that is 10 to the power 6 ohm plus how much? 0. It will be 0.2 into 10 power 6. 2. So the total value will be, Into 10 power it's 6. better you write it this way only, 1.2 Sir, that correct mega. in that first case also. Yes, this will be also right in this one way. 1 plus 0.02 mega ohm, right? So this will be simply 1.2 mega ohm total resistance of the circuit. So here you can, if you calculate the value of current, so it will be I is equal to V by R 6 by 1.2. So you will get how much? 5 microampere, right? So you can Yes, sir. see that even if we are changing the magnitude of the load resistance from 20 kilo ohm up to 200 kilo ohm, the magnitude of the current or current source, you can say, is nearly constant. When we have considered 20 kilo ohm only, then it was 5.88 microampere. And when we have considered the full value of the load resistance, that is 200 kilo ohm, उस केस में जो है it is nearly same, both the value you can say that nearly same. So hence the source can be considered for all practical purposes to be a constant current source. So this type of source can be considered as a constant or ideal current source. ठीक है, तो ये एक था इम्पोर्टेंट टर्म जो कि जो है सो बिफोर वी गो टू द this circuit theorem, so you should know that. Apart from this, there are some basic terms. I will just write it and please go through it by yourself, take the help of any textbook. These things will be actually required. First one is your linear circuit. Then second is non-linear circuit. इसका सबका डिफिनीशन क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, ये तुम लोग पढ़ के आओगे नेक्स्ट क्लास में. Bilateral circuit, unilateral circuit, then passive network, active network, then these things we have already discussed. Node क्या होता है, ये सब फिर भी अपना एक देख लेना, स्टैंडर्ड डिफिनीशन क्या होता है, क्योंकि कभी कभी वाइवा में लोग पूछ देते हैं व्हाट डू यू मीन बाय नोड, ब्रांच, लूप और मेश. We have seen the application of these three things, but these are the main parts which will be required while we will talk about this network theorems.
So maximum 2 to 3 classes I will take in this unit 1 now, because all the contents will be covered, and at last you will get a assignment sheet which you have to submit on the MS Team itself, right? So any confusion for today's class? Otherwise time is over, we can close now. Sir, you said you will be taking a few classes for this chapter. Yes, only 2-3 classes are required in this chapter now. Then we will start another chapter. I was saying that. Okay, sir. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.